Good evening, everyone. Warm welcome to your own platform. We call it as Exam Norm. And I welcome you all in the next session, which is a very important session which you need to cover before your RBI Grade B examination, because there is a great probability that the direct question will be asked from this particular session in your upcoming examination itself. तो अगर आप 13 जून को आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर यू आर गोइंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन इन द नियर फ्यूचर, दिस सेशन इज अ मस्ट वॉच सेशन. अगले 30 से 40 मिनट में I will be discussing two important news. One is the monetary policy of RBI, which has been presented in June 2026, and even I will be discussing one more important point, that is the limit of individual investors as well as foreign portfolio investors in the government securities as well as in the equity market, which have been revised recently by Government of India as well as RBI. These limits have been revised keeping in mind the current scenario or the current global scenario, I would say the issues which are prevailing, the geopolitical tension. So in order to stand strong during these tough times, government has taken up a very bold step, which we will be discussing in today's session. So before I start with the discussion, I know this session is not ought to be scheduled on Sunday at 5 p.m. This session is technically conducted on Saturday itself, but yesterday there was some technical issue because of which I was not able to go live. But अब ये session काफी ज़्यादा important है if you are preparing for the upcoming RBI Grade B examination. ठीक है जी. So बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले before I start with the monetary policy वाला part, I'll not discuss the monetary policy news first. Before discussing the monetary policy news, I have one more important aspect of today's session, that is the second news. I'll start with the second news and then I'll come back to the first news itself. But if you are planning to clear this examination, that is the RBI Grade B exam, so Exam Norm is coming up with a marathon session which has annual surveys marathon, which cover all the annual surveys on 8th of June, schemes marathon, all the important schemes, 9th of June, all the RBI circulars, 10th of June, and then PIB marathon on 11th of June. That is, these sessions are the must watch session if you want to score good marks in your upcoming examination. तो आओ जरा पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और आज की जो हमारी पहली न्यूज है जिससे हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एंड देन आई विल बी मूविंग अहेड, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू India's June 2026 reform package for foreign investment in equities as well as in government securities. 2 मिनट की बात है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो ज्यादा टाइम हम लगाएंगे भी नहीं. हम उतना ही समय लगाएंगे ताकि ये पूरे का पूरा टॉपिक जल्दी से जल्दी हमारा कवर हो जाए. दैट इज द एजेंडा बिहाइंड टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है. अब सबसे पहला पॉइंट, इफ आई आस्क यू अ वेरी फर्स्ट पॉइंट, guys, can you please give me an answer in the comment section that foreign portfolio investment in the debt instruments, are they allowed free of cost, or are they allowed unlimited, or there is certain limit which has been decided by the government? So the answer is, please pay attention. If I talk about foreign portfolio investment, and if the foreign portfolio investment is ought to be done in the debt market or in the debt instruments, then in that particular case there are certain limits. And what are these limits, guys? The limits, if I talk about, so these limits are 6% in case of central government securities, it is 2% in case of state government securities, it is 15% in case of corporate bonds. Say yes or no. It is 15% in case of corporate bonds. Say yes or no. Second point is, if this investment is done in the central government securities, then there are 3 important restrictions. What are those 3 important restrictions? So the first restriction is single FPI can hold up to 30% of total investment, up to 30% of total investment in 30% of total investment in government securities in the form of short-term instruments, and rest 70% can be held in the form of long-term instruments. तो ये पहली restriction है कि अगर कोई single FPI है, for example, there is a company named X, it is planning to invest 1,000 crores in Indian government securities, then in that particular case, they will be allowed to invest
300 crores, up to 300 crores in the short term, securities, and rest can be invested in the long term securities. Second point is, if I talk about government security, issue. So government security issue, let's say government has issued a security. I'm just writing it down. Let's say 2030 at the rate 7%. So it means a government security is issued which is going to mature by 2030, and its percentage, or I would say the interest on it, will be 7%, and the total issue is, in this government security is what? So the total issue of this government security is, let's say, 10,000 crores. If it is 10,000 crores, then there is a limit. Limit says in that particular case, FPI can be 30% of total issue. FPI can be 30% of total issue of given सिक्योरिटी. इसका मतलब क्या कि सर ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने लिखी है जिसकी टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ की है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसमें जो टोटल एफपीआई इन्वेस्ट हो सकता है दैट कैन बी अप टू 30%. इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है. इट इज नॉट सिंगल, इट इज टोटल एफपीआई विच इज डन बाय मल्टीपल कंपनीज. आई डोंट केयर. ठीक है जी. तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा पॉइंट है, if we are talking about FPI, there is an overall limit as well. The overall limit is, sir, FPI can invest 15% of overall limit, 15% of overall limit in 15% of overall limit if you are a long-term investor, and in other cases it is 10% of overall limit in case of other इन्वेस्टर. अब यहां पे एक चीज आपको समझनी है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आज की डेट में अगर टोटल एफपीआई इन्वेस्टमेंट थ्रू जनरल रूट, एज आई हैव मेंशन ओवर हियर, थ्रू जनरल रूट इज, लेट्स से 1 लाख करोड़, कि भैया आज 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो सकते हैं. दैट इज 6% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट डन. दिस इज टोटल FPI which can be done in government securities overall. Then in that case, an FPI can invest 15%. An FPI can invest 15% if it is dealing in long term. An FPI can invest 10% of the total limit allowed, to the FPIs, that is 10%. So overall limit allowed for all the FPIs. Is this point clear? अरे क्लियर है, बोलो, पढ़ चुके हैं हम ये. Yes or no? If it is clear, give me yes sir. अब पॉइंट है कि सर जब पढ़ चुके हैं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भैया पढ़ तो चुके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है. प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो पढ़ चुके हैं उसे भूलना होगा. आरबीआई ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, these limits are still these limits, they are still existing, but these limits have been removed. These limits are still existing, but these limits have been removed. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिंगल FPI investor in that particular case, what would I say? Sir, I would say if FPI investment is done, in that particular case 30% short term वाला पार्ट खत्म हो गया, 30% security wise limit for all FPIs, ये खत्म हो गया. उसके अलावा सिंगल एफपीआई लिमिट as a percentage of overall limit has been also removed. कहानी खत्म हो गई. अब कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. नाउ इफ अ फॉरेन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग, दे कैन इन्वेस्ट more than 30% of their total investment in these short-term securities. They can invest more than 30% in the single issue of government securities, as well as there is no criteria on long-term or short-term. Rather, I would say long-term has been merged into general route only.
लॉन्ग टर्म हैज बीन मर्ज्ड इनटू जनरल रूट ओनली। अब लॉन्ग टर्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मान लो कि सर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उस 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट में एक एफपीआई इन्वेस्ट करने आया, तो उस एफपीआई को अलाउ किया जा रहा है 15%, दैट इज 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और दूसरे एफपीआई को अलाउ किया जा रहा है 10%, that is 10,000 crore का investment. But if this FPI has more capacity to invest, then they can invest more than that. Now there is no barrier in terms of 15 or 10%. ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि सर, जैसा कि किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा, इज इट डन टू इंक्रीज एफडीआई? दिस इज नॉट एफडीआई, दिस इज नॉट एफडीआई गाइस, दिस इज रादर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिफरेंट है. दैट इज बेसिकली डन इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू सेट अप न्यू इंडस्ट्री और इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री. रादर इट इज एफपीआई. इट इज बेसिकली टू बूस्ट एफपीआई, क्योंकि हमने देखा था इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर द नेट एफपीआई वाज आउटफ्लो फॉर इंडिया, एंड इफ देयर वाज एन आउटफ्लो of net FPI in India, and that was the reason these limits have been revised. That is the reason these limits have been revised. अब इसके बाद अगर हम बात करें, what is the next point I have? So the next point is with respect to the individual. The next point is with respect to the individual. So what point you are trying to mention over here? That if I'm trying to mention the point over here is, there is a term known as PROI, that is person resident outside India. So person resident outside India who is allowed to invest, in the equity instruments, Earlier this allowed, or earlier it was allowed only to uh, earlier it was allowed only to person with Indian origin. Earlier it was allowed only to the person with Indian origin, person, or I would say overseas citizen of India, as well as NRI, that is non-resident Indians. But now this has been removed. It says regardless of the past connections, regardless of the current citizenship, PROI will be defined as per FEMA. And FEMA says any individual which is residing outside India for more than 182 days will be taken up as resident outside India, and in that case they are allowed to invest in equity instrument. Not only this, earlier investment which was allowed was 15%, sorry 5%. Earlier investment which was allowed was, so that is 5% of companies capital, 5% of companies capital, paid up capital. But now this has been increased to 10%. This is basically to boost what? Now this is basically to boost your foreign direct investment. Second point is the aggregate limit. The aggregate limit for all foreign or for all person resident outside India. Earlier the limit was 10%, but now this limit has been increased to 24%. मतलब एक कंपनी में अगर फॉरेन इंडिविजुअल्स चाहें तो 24% तक का इन टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन इफ सिंगल इंडिविजुअल की बात करेंगे आप, इन दैट पर्टिकुलर केस द सिंगल इंडिविजुअल इज अलाउड टू होल्ड अप टू 10% only. Is it clear? नहीं, मेरे हिसाब से 24% है. एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लो. I guess it is 24%, it is not 26%. एक बार चेक कर लो डेस्टिनेशन, एक बार चेक कर लो, अगर कुछ चेंज होगा विल डू दैट. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें, द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज, एक जो और चीज चेंज हुई है, दैट इज फुली एक्सेसिबल रूट. अब फुली एक्सेसिबल रूट में new government securities have been added, which will be accessible without any limit, without any consideration, as well as sovereign green bonds have been also included under the fully accessible route, so that we can enhance the investment in the sovereign green bonds to boost the green finance in the economy. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इससे बेनिफिट क्या होगा. तो इफ आई टॉक अबाउट
the benefit, that point is again really very important. So benefit is obviously the inflow of foreign currency will increase. Undoubtedly, there is no doubt with that. Along with this, there will be uh, there will be increase in इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमें लगता है कि इतनी ज्यादा लिमिट्स हैं और बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। ऐसा है नहीं। अगर मैं आपको पूरी लिमिट्स दिखाऊंगा तो ये जो 6% वाली लिमिट है, इट्स वेरी हाई। ये जो 6% वाली लिमिट है, इट्स वेरी हाई। इंडिया इज प्रीटी बिलो इंडिया इज प्रीटी बिलो इन कंपैरिजन टू द 6% ऑफ लिमिट विच हैज बीन अलाउड, pretty below in comparison to the 6% of the limit which has been allowed. ठीक है जी, clear हो गया point? Any doubt till this point, anybody? Any doubt till this point, anybody? Please let me know in the comment section. अगर कोई doubt नहीं है, then I will be moving ahead with the discussion. There is no doubt, then I will be moving ahead with the discussion quickly. और अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। आई एम हियर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। क्विकली 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 जल्दी से रिप्लाई करो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, इसमें एक और चेंज हुआ है। द नेक्स्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सेम इज दैट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। दैट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। Government has come up with a very bold, I would say, government has come up with a very bold decision with respect to the income tax which is going to be charged. So government has announced very clearly that no income tax will be charged on capital gain as well as interest rate. No income tax will be charged on capital gain as well as interest rate which you are going to earn from the government securities. Now the question is, so will it be available? Will it be available only for the foreign investors, or it is available throughout all the investors out there in the country? Any idea? Any idea? Anybody who has read about this? Still waiting for all? अच्छा, कोई और बताना चाहे? कोई और बताना चाहे? सर, इट्स ओनली फॉर एफपीआईज, इट्स नॉट फॉर ऑल। आपके और मेरे लिए गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। गवर्नमेंट हैज नॉट अलाउड इट फॉर यू एंड मी। रादर गवर्नमेंट हैज अलाउड दिस फॉर ओनली एंड ओनली द एफपीआईज। तो जो भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट एफपीआई इन्वेस्टमेंट, जो भी उनको कैपिटल गेन होता था, कैपिटल गेन का मतलब आज गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, कल को उसकी डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने की वजह से यू सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट हायर प्राइस, तो वहां से जो आपको रिटर्न मिला, द अर्निंग्स व्हिच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम देयर, दैट विल बी टर्म्ड एज योर कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन पे ऑब्वियसली वी आर वेरी वेल अवेयर दैट गवर्नमेंट चार्ज टैक्स ऑन इट, और उसी टैक्स को अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिसेंटली एग्जम्प्ट कर दिया एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई बातें? shall I show you the entire data which I have crafted for you, the entire content which I have crafted for you? If you are ready, just give me yes sir, so that I can discuss that with you quickly. जल्दी से बता दो। कोई और डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग अहेड। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ? आई होप नो पॉइंट हैज बीन मिस्ड, एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है।
चलो अब मैं आपको अपना कंटेंट दिखा देता हूं जो आपको एक बार पढ़ना और एक बार पढ़ने से आपकी कहानी सेट हो जाएगी, उसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो देखना जरा, what does it says? It says that, please pay attention. The government of India announced reform package focused on two important areas at the same time: foreign investment in equity segment as well as foreign portfolio investment in foreign and government securities. भैया दो चीजों पे टारगेट है, इक्विटी सेगमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन, और जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। Equity reform expand who can invest in Indian listed companies and how much they can expand, how much they can invest. Government debt reforms remove several old restrictions, expand fully accessible route and simplified the investment structure and make tax treatment more attractive. This has been done recently. तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल पर्संस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. सो इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2026-27 that individual person resident outside India or PROIs will now be allowed to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. Earlier this route was only available for NRIs as well as overseas citizens of India, but now it will be available for every non-resident Indian, or it will be available for everybody or everyone or every individual who is not the resident of India. Now the limit has been increased, so up to 10% in any company under the scheme, which was earlier 5% allowed. Aggregate limit has been increased from 10% to 24%. Done. Government expects this to attract more stable foreign capital, deepen market support, broader participation in Indian equities. The Department of Economic Affairs is implementing this through the Foreign Exchange Management Rules 2026. Government also emphasized that existing onboarding system used for NRI and OCI investors will be used, which should make the process more efficient and reduce compliance burden. तो जो single window process है जिसमें आप आओ, register करो, invest करो, same will be offered from now onwards to the other non-residents or to the other foreign nationals who are not the residents of India who want to invest in India. ठीक है जी. अब पॉइंट आता है related to government securities. With respect to related to government securities, so the changes have been done in general route as well as fully accessible route. क्या चीजें सेम है सर? एलिजिबल इन्वेस्टर्स आर सेम, ओनली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे आर परमिटेड टू इन्वेस्ट थ्रू दिस रूट. इंडिविजुअल के बारे में कोई मेंशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है. सेकंड इज द लिमिट, ओवरऑल लिमिट हैज बीन फिक्स्ड. द कैपिंग इज द टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक of central government security. 6% can be invested by foreign portfolio investment, 2% foreign portfolio investment, and up to 15% foreign portfolio investment. RBI notifies the absolute limits annually ताकि आपको पता हो कि भैया एनुअल लिमिट क्या है और उसमें से आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट एवरीबडी इज अवेयर कि लिमिट क्या है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट डन, एंड द लिमिट्स कैन बी चेक्ड, लिमिट्स कैन बी रिव्यूड प्रीटी इजीली. ठीक है जी, समझ आ रहा है ना? आई होप आई एम नॉट रनिंग. I hope I'm not running. I hope you are understanding what I'm trying to explain you, because we have already discussed the entire story. अब तो मुझे लगता है कि 5 मिनट में मुझे सारी स्टोरी एक बार आपको दिखाकर खत्म कर देनी चाहिए. I hope I'm correct. I hope I'm correct. Please reply everybody. अरे बोलो भाई, जल्दी करो. 7 बजे फिर आपकी क्लास भी है मनीष सर की, और उसके बाद कल से मैराथन्स भी स्टार्ट हो रही है. सो आई डोंट वांट कि हम ज़्यादा टाइम लें, क्योंकि ये बस आज मैं कहूँगा कि लास्ट सेशन है फॉर योर RBI ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन. 7 जून तक की न्यूज़ मैंने आज कवर कर ली. एक दो छोटी छोटी न्यूज़ है वो मैं PDF में इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, अब बात करते हैं चेंजेस की. तो सर क्या क्या रिमूव किया? पहला सर, सिक्योरिटी वाइज कैप ensures diversification by restricting total foreign holding in a single government security to 30% has been removed. Second is, short-term exposure is capped at 30% of total investment in each category to limit speculative flow. Next is, concentration limit prevents excessive exposure by single investor, 15% for long-term and 10% for short-term or other FPIs. These three limits have been removed. अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका long-term FPI है, that has been merged with the short-term or the other FPI only. Now the question over here is, so can you please explain what is this long-term category and short-term category or general category? So please pay attention.
Before amendment, FPI investment in government securities were divided into two categories. One is general category. General category, this was available to all the FPIs. So in general category, ऐसा नहीं करते, उल्टा करते हैं. 1 second. हाँ, ऐसा करते हैं कि सर ये जो लॉन्ग टर्म एफपीआई है, लॉन्ग टर्म एफपीआई है, पहले इस पे बात करते हैं. सर लॉन्ग टर्म एफपीआई क्या है? सर लॉन्ग टर्म एफपीआई, a separate quota was reserved, that is 15% for certain long term investors, and in this case, what all long term investors we have? So we include sovereign wealth funds, we include pension funds, insurance funds, as well as we include foreign central banks, we include multilateral institutions. For all of them, we call it as long term FPI, और उनके लिए जो लिमिट है, that is 15% of the total limit, of the total available limit. ठीक है. अब दूसरी तरफ, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, in general FPI, we include what all? Sir, in general FPI, we include foreign mutual funds, we include hedge funds, we include asset management companies, we include foreign banks. They all are included in this particular category. So under this concentration limit, security wise limit, and short term investment limit was given, but for long term the limit was pretty high, but now they have been merged. अब चाहे तो asset management company invest कर रही है, या फिर एक इंश्योरेंस फंड या पेंशन फंड इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर सॉवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट हो रहा है, फॉर ऑल ऑफ देम देयर इज नो लिमिट एज सच, देयर इज नो कंसंट्रेशन क्राइटेरिया एज सच. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. सो दिस इज द चेंज व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड रिसेंटली. आई होप नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. द वे आई हैव रिटन इट हैज मेड द पॉइंट क्लियर. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो फुली एक्सेसिबल रूट है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, बस उसमें एक ही है कि जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, बस आप उन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना मर्जी इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है. बट अब इसमें पहले क्या था, सिक्योरिटीज बहुत कम थी, तो भले ये फुली एक्सेसिबल रूट है, बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट था नहीं बिकॉज ऑफ pretty less number of securities included. But now government wants to attract more foreign investment, so government has included all new issuances of government securities which are going to mature in 15 years, 30 years or 40 years. And this is significant because it opens the long end of India's sovereign yield curve to greater foreign participation. Simple है, ठीक है जी. इसके अलावा there has been an addition of the sovereign green bonds of tenure 5, 7, 10, 15, 30, 40 years. That has also been announced. And even apart from future new issues, RBI has also added some existing securities to the fully accessible route. That is, they are included as 6.68% government security, 2040 mature, 2055 mature 7.24, 2066 mature 7.71%. These are already existing securities. अब इसमें भी foreign portfolio investment can be done under the fully accessible route. तो ये हो गया न्यू और ये हो गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. उस तक गवर्नमेंट पहुंच गई है कि भैया आओ बस पैसा दो, आओ बस पैसा दो. अब यहां पे थोड़ी सी चेंजेस किए गए हैं. वो क्या? Changes in the monitoring and regulatory oversight. Because the security wise limit has been removed, the monitoring role of the Clearing Corporation of India has become simpler. भैया पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेचारी यही चेक करती रह जाती थी, सिंगल लिमिट कितनी है, ओवरऑल लिमिट कितनी है, कहीं क्रॉस तो नहीं हो गई, एक्सेप्ट करूं या ना करूं, सेटल करूं या ना करूं. भैया अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब कोई लिमिट ही नहीं है. अब जो लिमिट नहीं है तो एंजॉय करो. तो CCIL के लिए इट्स अ ब्लेस. जो इतनी लिमिट्स उन्हें चेक करनी पड़ती थी बिफोर द सेटलमेंट, नाउ दोज ऑल लिमिट्स हैव बीन रिमूव्ड. Now comes up the major important part, that is related to tax. A key part of the reform package is tax exemption granted to FPIs on interest income and capital gains from investment in government securities. So from 1st of April 2026, this change has been done because tax often plays a decisive role, or I would say a resistive role in international investment decision. तो जब लगा कि टैक्स की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और हमें डॉलर चाहिए वरना मर जाएंगे, तो भैया टैक्स छोड़ो आप आओ, बस टैक्स छोड़ो अब आप आओ. तो गवर्नमेंट सेड दैट दिस मूव. अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमारी कंट्री की हालत इतनी बुरी है कि हम इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं? तो
उसका भी आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में जस्टिफिकेशन दिया और ये कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि सर दिस मूव अलाइंस विद इंडिया विद मेनी कंपेरेबल जुरिडिक्शन, कि हम ही नहीं कर रहे यार, बहुत सारी जो जुरिडिक्शंस हैं व्हिच आर कंपेरेबल टू अस, दे आर आल्सो ऑफरिंग द सेम टैक्स ट्रीटमेंट। तो अगर हम चाहते हैं दैट वी शुड बी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, वी शुड ऑफर द सेम, अदरवाइज द इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। नॉट ओनली दिस, they have given a specific benefit for bank for international settlement as well। तो अगर BIS, अभी तक तो BIS ने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन यहां पे बहुत क्लियरली बोला गया कि अगर फ्यूचर में BIS इन्वेस्ट करेगा, then BIS will also enjoy certain types of tax exemptions। अब क्वेश्चन ये है कि सर करंट टैक्स रेट्स क्या है? फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो आस्क हुए हैं उसके हिसाब से income from securities is taxable at 20%. Short-term capital gain can be taxed at 20% or 30% or 20% depending on the case, while long-term can be taxed 12.5%। तो भैया यहाँ पे जो taxes हैं they are pretty high। Income जो हो रही है that is interest, that is taxable 20%, और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है that will be 20, 30 और 12.5%। but now FPI they have given the exemptions on these taxes। अब पॉइंट आता है कि भैया करंट हालत क्या है ये तो बताओ। अगर मैं करंट हालत की बात करूं तो करंट स्टेटस ये है, इन द जनरल रूट FPI holding is around 54,000 crore out of total 64 lakh crore rupees, which is only 0.83%, where the limit is 6%। इसीलिए तो VRR वॉलंटरी रिटेंशन रूट को भी इंक्लूड कर लिया, अब इसमें लॉन्ग टर्म को भी इंक्लूड कर लिया। दैट डे आई थिंक शायद जयेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जयेश वाज लिटिल बिट वरिड कि सर VRR को उसमें इंक्लूड कर लिया तो क्या गवर्नमेंट रूट के लिए कम नहीं हो जाएगा? तो जयेश, दिस इज द आंसर। आई एम नॉट श्योर जयेश whether it was you or Deepak, I don't remember, but किसी ने पूछा था तो आंसर ये है कि भाई इंक्लूड कर भी लिया तो भी क्या प्रॉब्लम है, इट इज ओनली 0.83%। वी हैव अ टारगेट ऑफ 6% which is pretty high। under the under the fully accessible route, FPI holding is 3,21,000 crore out of 47 lakh crore, which is about 6.74%। अगर मैं दोनों को कंबाइन भी कर लूं तो भी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 3.34%, which is pretty low। इसीलिए ये रिफॉर्म्स, ये इनिशिएटिव्स they have been taken to increase more and more foreign investment or foreign portfolio investment in the government securities। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? समझ आ गई कहानी? समझ आ गई कहानी? मुझे लगता है कि एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने समझाया, इट शुड बी pretty much clear to everybody। If it is clear, give me a thumbs up। If it is clear, give me a thumbs up। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे। ऑनेस्टली बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी में इस बार कुछ है नहीं वर्थ रिमेंबरिंग, क्योंकि रेट्स चेंज किए नहीं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एज इट इज है, अनसर्टेनिटी एज इट इज है। हाँ, जीडीपी रेट्स एंड ऑल ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी से देख लेते हैं, 10 मिनट का काम है, इससे टाइम लगाएंगे नहीं। दिया मैंने बहुत कुछ है उसमें, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दूंगा। बहुत बार अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप इतना ज्यादा डेटा क्यों देते हो? वो इसलिए देता हूं भाई ताकि तुम अगर पहली बार किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो आप उसकी मदद से पढ़ पाओ, उसकी मदद से सीख पाओ, आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े ऑन दी क्लासेस। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? वी ऑल नो दैट we have 6 members। These are the names of the 6 members, out of which 3 are RBI governor and 3 are the 3 are RBI officials and rest 3 are the eminent economists। इसके बाद functions of monetary policy committee, we all know that band targeting is 2 to 6%। पहला point, so there is no change in the policy rate, it's still 5.25%, SDF 5% and bank rate as well as MSF 5.50%। Stance is still neutral। In future, it depends on the situation whether RBI will increase or decrease the rates। Whether RBI will increase or decrease the rate। अब क्या reasons है? सर रीजन बड़े सिंपल है कि सर वेस्ट एशियन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी चल रही है। This has led to the moderation in growth projection and there is an increase in inflation forecast। तो एक तरफ growth projections पे फर्क पड़ा, दूसरी तरफ inflation बढ़ी है, और अगर इस समय हमने रेपो रेट को कम कर दिया तो it may result in increase in GDP but it will impact or it will have a negative impact on the inflation।
even though headline inflation is expected to move towards upward tolerance band in quarter 3 2026-27, तो भैया थर्ड क्वार्टर में हम 6% के आसपास भी इन्फ्लेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एमपीसी कहता है कि कोई बात नहीं, once this supply shock will fade, we will come back to the normal. ठीक, अगला पॉइंट है, अंडर दी inflationary pressures are still relatively standing, but the possibility of second round effect through wages and expectations cannot be ignored. कि भैया जो अभी wages की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो उससे भी तो ऑलरेडी मार्केट में पैसा आएगा, तो उससे भी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, उससे भी तो ग्रोथ बढ़ेगी. अगर हम एक तरफ पैसा बढ़ा दिया पब्लिक की पॉकेट में थ्रू इनकम, थ्रू सैलरीज एंड ऑल, और दूसरी तरफ रेपो रेट कम कर दिया, तो पैसे पैसा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा. MPC also took a note of subnormal monsoon forecast as well as El Nino risk. I hope आपको पता होगा El Nino risk का मतलब, which results in early monsoon, heavy monsoon, जिससे कहीं ना कहीं आपकी फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि आपका क्रॉप प्रोडक्शन इंपैक्ट होने के चांसेस है. ऑन द ग्रोथ साइड, elevated energy prices and global supply constraints are already affecting the growth activity, और उन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए आरबीआई ने सोचा अभी रुकना चाहिए. ग्लोबल सिनेरियो भी बिल्कुल वही है जैसा सिनेरियो इंडिया का है. ग्लोबल इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ मोर फ्रेजाइल फेज due to the current West Asian issues. Energy market remain volatile. Crude oil inventories are weakening. These developments have forced central banks in the major advanced economies to adopt more cautious approach, with tightening bias becoming more likely in some jurisdiction. Global financial market has displayed mixed pattern. क्या market ने pattern दिया है? Equity market remains buoyant, largely supported by optimism around artificial intelligence, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टिल देयर. लेकिन सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स जो है, sovereign bond yields, they have hardened because of the inflation and fiscal sustainability issues all over the globe. अगर मैं बात करूं, US dollar index has appreciated recently as rate expectations and global risk sentiments continue to shift. तो भैया हालत ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की भी ज्यादा अच्छी नहीं है. अब अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या प्रोजेक्टेड है सर? जीडीपी फॉर 2026-27 इज प्रोजेक्टेड टू बी 6.6% एज पर द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट. ये ग्रोथ क्यों एक्सपेक्टेड है सर? इट इज सपोर्टिव बिकॉज ऑफ अर्बन कंजम्पशन, GST rationalization, bank and non-bank credit flow remains healthy, and government capital expenditure as well as manufacturing sector is also strong. But कुछ रिस्क है. पहला रिस्क, global supply disruptions, volatile financial market, elevated energy price and forecast also factors in the possibility that southwest monsoon may be deficient, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट कम होगी. तो ये भैया नेगेटिव है जीडीपी ग्रोथ का एस्पेक्ट, और ये पॉजिटिव फैक्टर्स है फॉर जीडीपी ग्रोथ, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जीडीपी ग्रोथ टू बी 6.6% फॉर 2026-27. CPI inflation rates for the entire financial year is expected to be 5.1% as per the latest estimates in the monetary policy report, and core inflation will be 4.7%, which means core inflation or FPI inflation or combined inflation is not वेरी डिफरेंट. और ये डिफरेंट क्यों नहीं है सर? ऑब्वियसली क्योंकि द इन्फ्लेशन विल बी ओवरऑल, सिर्फ और फूड और फ्यूल की वजह से इन्फ्लेशन अब नहीं देखने को मिलेगी. जो इन्फ्लेशन होगी दैट विल बी ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. अगला पॉइंट आता है कि सर एक्सटर्नल सेक्टर की क्या हालत है? सर एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर. The strength of service export and inward remittance can help the Indian economy to counter the current scenario. On capital flows, foreign direct investment is encouraging, but still to promote it, initiatives have been taken. If I say in contrast, the foreign portfolio investment was negative, और उसको भी overcome करने के लिए government security के context में changes have been done. India's foreign exchange reserves have remained high, that is $682.3 billion as of 29th of May 2026, which offers around 11 months of comfortable relative import coverage capacity for 11 months. That is absolutely correct. ठीक है जी. अब पॉइंट आता है कि लिक्विडिटी की क्या हालत है. सर अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी इज क्वाइट गुड.
System liquidity remains comfortable. We have a liquidity of around 2.63 lakh crore rupees. RBI also used mix of durable and transient liquidity operations जैसे कि open market operation है या फिर swap agreements है in order to manage the liquidity in the market. Going forward, liquidity is expected to improve. It is expected to improve because of usual drawdown of government cash balances after RBI's surplus transfer and return of currency to the banking system during the monsoon season. वही एक तो RBI का पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का वही पैसा बैंक्स में आएगा और उसके साथ साथ जो फ्यूचर में मॉनसून के बाद inflow of funds बढ़ेंगे in the banking sector, that will improve the liquidity. Market rates, they broadly moved within the policy corridor only, that is weighted average call rate is close to the repo rate. Second is market rates are close to these policy rates. लेकिन अगर मैं short term money market rates की बात करूं, they moderated in the starting, but again they came under pressure in the month of May क्योंकि भैया आप सबको लगता है कि long term invest करो rather than short term. Credit market transmission has also moderated in the March and April with some hardening in lending and deposit rates क्योंकि सर उसका रीजन है ना, अब आज की डेट में क्रेडिट रेट्स कम हो रहे हैं, लेंडिंग रेट्स बैंक के कम हो रहे हैं और उसके साथ साइमल्टेनियसली देयर इज डिक्रीज इन डिपॉजिट रेट, तो उसे कर्ब करने के लिए दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्रेडिट ग्रोथ from all the sources is 15.4% in the year 2025-26 and bank credit remained broad based and strong. तो भैया ओवरऑल अगर मैं बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ की बात करूं from all the sources it is 15.4%. But on the other side, deposit rate is low, which is 11.5%. And due to this gap, banks are utilizing the certificate of deposit. Then if I talk about financial stability, so scheduled banks, they are pretty stable. सब कुछ उनका set है. NBFCs, they are also doing well. And the resilience of banks and NBFC suggests that financial sector is currently capable of supporting growth without any immediate stress. तो भैया आपको बैंकिंग सेक्टर से NBFC सेक्टर से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है. इट विल सपोर्ट योर इकोनॉमी, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एन नेगेटिव इंपैक्ट ऑन यू. तो 8th of June, 9th of June, 10th of June, 11th of June डेट सेव कर लो. वी हैव अ मैराथन सेशन जिसमें जनवरी टू जून जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है रिलेटेड टू annual survey due to related to schemes, RBI circulars and PIB news will be covered in that particular session itself. Last but not the least is new measures. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा और वो मैं कहीं ना कहीं डिटेल में पढ़ा भी चुका हूं, तो डरने वाली बात नहीं है. न्यू मेजर्स क्या है सर? पहला, फुली एक्सेसिबल रूट को एक्सपैंड कर दिया. FAR expansion already discussed in the next news. Second point is investment limits for NRIs and OCIs in the equity instruments have been increased as well as the bucket of investment has also increased. कि अब भैया सिर्फ NRI नहीं, सिर्फ overseas citizens of India ही नहीं, बल्कि foreign citizens, non-resident or foreign citizens residing outside India, they are also allowed to invest in India. Third is concessional forex swap facility will be provided till 30th of September 2026 to encourage ECB by PSUs. ECB का मतलब external commercial borrowings, कि भैया आप external commercial borrowings अगर कर रहे हैं तो उस केस में you can go for concessional forex swap facility. मतलब forex swap facility means you swap your forex with INR. So in that particular case, this initiative has been taken. Next is similar facility covering the full hedging cost will be made available till September 30 to authorized dealers raising fresh FCNR deposit. तो भैया अगर आप एक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ले रहे हैं और कल को अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो आपके डिपॉजिट की वैल्यू इंपैक्ट होगी एज अ बैंक, है ना. मान लो आपने आज $1 का डिपॉजिट लिया एज अ बैंक, you converted that $1 obviously into rupees, so you have 100 rupees. कल को यही $1 बढ़कर हो जाए 110, तो at the time of withdrawal you are supposed to pay 110. So this is a risk on a bank, जिसकी वजह से बैंक do not promote foreign currency non-resident accounts. but अब RBI क्या कह रहा है? Don't worry, we are giving you full hedging cost. Hedging cost का मतलब you get yourself hedged कि in near future I will be buying $1
अगेंस्ट 100 रुपीज और आप एक हेज एग्रीमेंट साइन कर लो। उस हेज एग्रीमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर कौन देगा? सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट दीज ऑथराइज्ड डीलर्स दे विल नॉट reject, they will not ignore to accept foreign currency non-resident deposits. Fifth point, what is the fifth point? So the fifth point is the time allowed for realization of export proceeds is proposed to be restored to 9 months. तो जो पहले 9 महीने था उसे 15 महीने किया गया, लेकिन अब भैया फॉरेन करेंसी की कमी है इंडिया में, तो अब ये कहा गया भैया इसको दोबारा 9 महीने पे ले आओ कि जो आपको पैसा फॉरेन एक्सपोर्ट्स के बदले में मिला, यू शुड receive that fund back into India within 9 months of the delivery, within 9 months of the completion of the target or completion of the trade, whatever it is. ठीक है जी, क्लियर हो गई? आई रिपीट, पहला is related to fully accessible route, it is related to government security, it is related to equity instrument investments by the individual. This is a foreign portfolio investment in government security. These are the 2 points. Third is concessional forex swap facility available. Fourth is full hedging cost will be made available till 30th of September 2026. And fifth point is what, sir? Realization of your export will again be reduced to 9 months in order to increase the inflow of foreign currency in the economy. ठीक है, अब आरबीआई ने कहा कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी की क्या सिनारियो है। आरबीआई ने कहा भैया हम चलते हैं किस पे? मार्केट एक्सचेंज रेट पे, डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर्स द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड, बट अनडाउटेडली इंडिया फॉलो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, व्हिच मींस RBI will interfere in the foreign exchange rate market, where RBI will increase the US dollars to decrease the depreciation of Indian rupees. ये बहुत clearly RBI ने mention कर दिया. So RBI ने कहा कि exchange rate policy remains unchanged. It does not target any specific level or band for the rupees. Instead, it will be allowed as per the market forces. But at the same time, RBI made it clear that I will intervene to curb excessive volatility and prevent disorderly movement, particularly when speculative pressure cause deviation and that are not aligned with fundamentals. Indian forex reserves provide a strong buffer. RBI said that we have good amount of forex reserves. We have good regulatory and market-based instruments. Whenever necessary to preserve orderly market conditions, we can do that. We can do that. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो जो पॉइंट मैंने जितने जहां मार्क किए बस उतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने ये डिटेल क्यों दी है? इसलिए दी है कि जब आप ये सारी डिटेल पढ़ोगे तो जो बेसिक पार्ट है वो याद हो जाएगा। मैंने देखा आप लोगों को जब आपका एग्जाम पास आया तो अब आपको लगता है कि सर ये इतना बड़ा पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। बिल्कुल टाइम लगता है, एक बार पढ़ने बैठो। अगर मैं यही 4 पॉइंट ऐसे दे दूं ना, लंबे छोटे से पॉइंट, ये पढ़ने में तो टाइम लगेगा नहीं, लेकिन ये कभी याद नहीं होगा। याद रखना मेरी ये बात, यू विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर इट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें याद रख पाए तो इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो, द वे आई मेक यू अंडरस्टैंड, उसी तरह से आप इसे रिवाइज करो, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉर श्योर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो आज 7 बजे मनीष सर की क्लास है, जरूर जुड़िएगा। और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे, मंडे on 8th of June, 9th of June, 10th of June and 11th of June, that is Monday to Thursday, we will be live for your marathon sessions. और next week, पूरे के पूरे next week के लिए फाइनेंस करंट अफेयर सेशन will be at hold, क्योंकि भैया अब इस एक हफ्ते के लिए फाइनेंस करंट अफेयर सेशन एंड PIB करंट अफेयर सेशन will be at hold, और उसके बाद दोबारा से we will resume it once you are done with your phase 1 examination. ठीक है जी, मजा आया? क्लियर हुआ? If you haven't hit the like button, do hit the like button, and I will be catching you all in the upcoming sessions to go. Bye bye, take care, good luck, and thank you so much for joining me on Sunday, and that too at 5 PM, जो कि मेरा टाइम स्लॉट भी नहीं है, but still you joined, you gave me love, thank you so much. We'll catch you soon, and do give me the feedback क्या पूरी की पूरी न्यूज समझ आई, मजा आया, क्लियर हो गया, याद रहेगा? Do share your feedback in the comment section. लिखते रहा करो कमेंट्स, अच्छा लगता है, and I always read your comments and I always give you a like. If you want that I should reply also, आज लिखना, आज मैं reply भी करूंगा. Let's interact more in the comment section. Bye bye, take care, good luck, God bless you all.